workshop that Ankit sir is taking for us on outcome-based education. Uh, Research Foundation of India has always strived to contribute to the very cause of research and education per se. Um, and we have been doing programs like workshops, FTPs, research symposiums for students, for researchers. We have been organizing national international conferences where we are inviting guests, and this is something which we do as to contribute to that collective pool of knowledge. uh, and we are trying to make certain things easy for every one of us. We have been faced with many tasks as a working professional. So we have been trying, Research Foundation of India, we have been trying to ease those tasks for all our fellow people through organizing such programs. And I'm very happy that Ankit Jain sir has been kind enough to guide us all on the outcome based education. And I'm sure that yesterday uh, we would have a great day. Yesterday we had a great day, or there was a fruitful discussion. So without taking much of your time, I invite Ankit sir. And before I hand over the proceedings to Ankit sir, I would request Ankit sir to please give us a brief or a short recap of the yesterday's discussion, and then we can start off with the day. Over to Ankit sir. Thank you so much, Dr. Shabra sir, and good evening to all. And I'm just sharing my PPT for the today's lecture. And as sir told, I recap last lecture within a 5 minutes of the starting of the session. Thank you very much, sir. Thank you. Good evening to all. And as we discussed in yesterday's lecture about the outcome-based education framework, and we will discuss about the formation of vision, mission, PEO, PO, PSO, and CO. And I give you one task that will be related to CO formation. And I am so happy that few of them are replied for the CO. And I go through that CO, and after that go through, I conclude something for you, and I will discuss that conclusion in this session also in starting 5 minutes of this session. As this is the outcome of the workshop, this is the structure of the workshop. Day 2, we will discuss about the CO-PO relation and correlation or mapping, AICT exam reforming, Bloom's taxonomy, assessment criteria, and task 2 for the Day 2. Firstly, I will discuss in 5 minutes for the yesterday lecture, as sir told, and we will discuss in last lecture about the OB outcome-based education framework. In outcome-based education is nothing. It is just a simply student-centric method, student-centric learning method, which follows the outcome-based framework. Outcome-based framework consists the vision, mission of the institute. That will be long-term. Vision means that that will be a long-term perspective or dream of the institute. Mission means to achieve that dream, the path or the way we can achieve that vision. That will be called as mission of the institute. Then we understand about the program educational objective. That will be program educational objective will be achieved after the graduation or after few years of the graduation, like say from 3 to 5 years. Then program outcome, that will be just during the graduation, the student, what quality the student have, that will be called as program outcome. And the course outcome, it's just after completion of the course, like any single subject we have taught. After that taughting that subject, what a student learn from that subject, that is called course outcome. And weekly topic outcomes, that will be after every lecture. As yesterday I have conducted one, I have taken one lecture, and the outcome of that lecture will be you are familiar with the vision, mission, PO, PSO, and you try or you can formulate the CO for your subjects. This is the outcome of the yesterday topic. This is the just overview of the yesterday lectures. And if we again, as I told you that I am getting the response, few of them are response for the task 1.
And I thought that there was some doubt for learning statement. So for studying 5 minutes, I am focusing on learning statement in detail with more examples, so you can clear up what is learning, what do you mean by learning statement, and I will reply on the task which you have submitted, the correct one by the evening or most probably by tomorrow morning. The As we discussed, the course outcome will consist two part. One is action verb and another one is learning statement. Now this learning statement that specify what learners learning will demonstrate in the performance. Today I will more elaborate about the course outcome. This is the more elevated way of the course outcome statement. As we told already that there is a two part. One is called action word. Action word that means already I discussed that action word will be identify, create, plan. All of you, those who submitted the task one, they use action word properly. They use identify, create, plan, review, analyze. They use this action word. But the learning statement, I am going to more in detail for learning statement. The learning statement consists three parts. The one is called knowledge part, another one is called condition, and third one is called criteria. Now the CO having four part. One is action verb जो आपने already use किया था, that is called action verb. Another one is action verb. After action verb, there will be a learning statement. The learning statement can be again bifurcate, like knowledge. Knowledge, what a student get represent the specific knowledge from any one or more of the 8 knowledge category. There will be a knowledge category that will be a entire different lecture, but there will be a 8 knowledge category. I already mentioned in this slide that 8 knowledge category must be covered in our COs. Then there will be a may or may not. The condition may be we can also use. The condition is optional part or optional element of CO, and criteria. Again, this is the optional element of the CO. Now the CO having 4 parts. Now, or you can understand in more specific way that action word is already you understand that we can use analyze or identify the word in the starting of the CO. Then learning outcome. Then learning outcome can again subdivided. We can say knowledge, specific knowledge category. Knowledge category means what student can get from your subject after teaching any one subject. What student will be understand, what student will be take home. That will be our knowledge. Then that knowledge is based on some condition, may or may not. That's why this is optional. And maybe some criteria against that knowledge. Then again it will be optional. Now I'm going to some example so you can better understand the CO statement. This is the first example that determine the dynamic unbalanced condition of given mechanical system of rigid body subjected to force and acceleration. Now you have to understand simply what is this action word. In this statement, determine is a action word. You have to understand determine क्यों action word है, क्योंकि determine जो है वो apply के ऊपर है. जब तक वो समझेगा नहीं, apply नहीं करेगा, जब तक वो determine नहीं कर पाएगा. Yes, please. Okay. Then यदि हम this statement, this is a sample statement of CO to understand what is action, what is knowledge, what is condition, and what is criteria. Now the action is in this statement is determine. Now what is knowledge? Knowledge is dynamic unbalanced condition. जो आप डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन दी डायनामिक अनबैलेंस कंडीशन. तो दिस डायनामिक अनबैलेंस कंडीशन इज नॉलेज. अब दिस डायनामिक अनबैलेंस कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू, दिस विल बी कंडीशनल बेस्ड. किस कंडीशनल बेस्ड है ये? ऑफ गिवन मैकेनिकल सिस्टम. सो द कंडीशन विल बी गिवन मैकेनिकल सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी subjected to force and acceleration. There will be no criteria in this statement for getting the knowledge. So the statement is very simple. The statement is indicating that there will be one action word that will be determine or apply. There will be a knowledge that will be dynamic unbalanced condition. There will be condition that will be a given mechanical system of rigid body subjected to force and acceleration. I hope so you are more detailed. You are better understanding from yesterday lecture that CO will consist for 2 parts. One is action word. Another one is learning outcome. Learning outcome again we can subdivide it. One is knowledge. Knowledge having 8 category. That will be conceptual हो सकते हैं. That will be meta consecutive हो सकते हैं. Fundamental design principle हो सकता है. Criteria and specific practical constraint हो सकते हैं. Designing हो सकती है. Factual based knowledge हो सकता है.
That will be a knowledge category. And condition may or may not be considered, and criteria may or may not be considered. This is a simple example of CO statement that includes the action that will be determined. Then there will be a knowledge that will be determine the dynamic unbalanced condition. That means knowledge will be dynamic unbalanced condition. And this dynamic unbalanced condition is applicable on given mechanical system. So the condition will be given mechanical system of rigid body subjected to force and acceleration. Now I have some example. We have to do a group task. Now the next will be this will be the simple CO statement. You have to reply what is the action word in this statement. You can reply in the chat box within the 30 seconds. The statement is very simple. Understand the effect of all the parameters in the voltage control oscillators through simulation using T-T. Can anyone reply what is the action verb in this statement? Understand the effect of all the parameters in voltage control oscillators through simulation using T-T. What is the action verb in this statement? Yes, this will be reply will be absolutely right. The action verb will be understand. Here the understand will be action verb. Now next will be, can anyone tell what is the knowledge from the statement? Can anyone reply what is the knowledge from the statement? The statement is very clear. Understand the effect of all the parameters in voltage control oscillator. So what will be the knowledge from the statement? Can anyone tell what is the knowledge you are getting from the statement? Yes, this will be absolutely right. The knowledge will be effect of all the parameter in voltage control oscillator. This will be more understand the effect of all the parameter in voltage control is oscillator. That means the voltage control oscillator के effect को ही हम यहाँ knowledge बोलते हैं. Voltage control के जो effects हैं, उनको parameters जो हैं, उनको हम यहाँ knowledge कह रहे हैं. पर यहाँ एक condition भी है. क्या condition है वो? Through simulation using T-T. मतलब जब तक आप simulate नहीं करोगे, you will not get the knowledge. So that means the condition will be using simulation using T-T. This will be the condition, and there will be no criteria for the given CO statement. I hope so. It will clear more your doubt regarding CO statement formation. Again, we will try next example. This will be next example. Determine the root of given equation accurate to 2 decimal place using Newton-Raphson method. Can anyone tell about the action verb in this statement? Can anyone tell about the action verb in this statement? Determine the roots of the given equation accurate to the 2nd decimal place using Newton-Raphson method. Yes, absolutely right. The action verb will be determined. We can say determine or apply. What will be the knowledge from this statement? हम finally क्या knowledge acquire कर रहे हैं या क्या knowledge हमको मिल रहा है, student को मिल रहा है from this CO statement? That will be determine will be the action verb. What knowledge will be getting from this statement? The knowledge, not the accurate to 2nd decimal place. This will be the criteria, we can say, because this will be criteria. This will be requirement of the user that the answer should be up to 2 decimal place. But the accurate to 2 decimal place is not the knowledge. The knowledge will be absolutely right. The root of the given equations. This will be the knowledge. Determine the root of the given equation. The root of the given equation will be the knowledge. Now the condition will be using Newton-Raphson. There are so many methods through which we can find out the roots of the given equation. But here it's mentioned using Newton-Raphson method. So condition will be using Newton-Raphson method. And finally, the criteria is given that you have to calculate the roots of the given equation accurate up to 2 decimal place. This will be the criteria for this particular CO statement. So we have understand that how action, knowledge, condition, and criteria will be differentiated in CO statement. I hope so. This example will clear you about this CO statement formation. This will be. I'm just taking example because I go through your task 1 reply, and I feel that I have to give more 5 minutes about CO statement formation. Now next will be the number of COs for the course. One thing I also observed that the number of COs, again there will be doubt. Please remember, too small number of COs does not capture the course information sufficiently. Like in any subject, we cannot put 2 CO or 1 CO. The CO must capture your syllabus completely.
That means not too small number of COs can be possible. If too many COs, then there will be assessment problem. We cannot assess all the CO. So the too small is not possible, too many is not possible. The best option will be the CO must be in between 4 to 6. The best option will be the CO will be 4 to 6. So please remember the too is small, because I got one reply that include only 2 CO. 2 CO is too small for capturing the capturing the syllabus, entire syllabus of any subject. And too many COs too many COs having difficulty to assess that COs for using assessment tool. So the CO must be manageable. It must be in the range of 4 to 6 COs. So please, the CO will be formed for any subject. It will be in the form of 4 to 6 in number. Do and don't, क्या चीजें हमको ध्यान रखना है सीओ फॉर्मेशन का टाइम. यूज ओनली वन एक्शन वर्ब. मैंने कुछ सीओस के रिप्लाई देखे, उन्होंने डिटरमाइन एंड अंडरस्टैंड करके लिखा है. डिटरमाइन एंड अंडरस्टैंड समथिंग. तो डिटरमाइन एंड अंडरस्टैंड में वी आर यूजिंग 2 एक्शन वर्ब. We must try to use only one action verb at a time. Don't use. I already saw one example in the task one that few of one of them I use like or such as word. Don't use the word includes, like, such as, different, various, etc. These are not suggestible for a formation of CO. With respect to your knowledge element, put in effort to make the CO statement as detailed as possible and measurable. उसको जितना आप डिटेल्ड बनाओगे, जितना मेजरेबल बनाओगे, उतना अच्छा है. And don't make it either too abstract and too specific. Now the checklist for the CO. आप कैसे चेक करोगे? क्योंकि जैसे आपने मुझे शेयर किया, अब आप मैं कुछ को रिप्लाई कर पाऊंगा, पर आफ्टर द 3 days, how you will check whether the CO is right or not, the CO formation is correct or not. So this will be the checklist for the CO formation. Does the CO being with an action verb? आप सबसे पहले चेक करें कि क्या CO के अंदर एक्शन वर्ब है. यदि CO के अंदर एक्शन वर्ब है, दैट मींस आपका फर्स्ट चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया. The second checklist will be, is the CO statement in terms of student performance rather than the teacher performance or course content to be covered. It must be stated in the form of student performance, like के student के performance के basis पे CO को state किया गया. Third, the CO states as learning product rather than learning process. आपको ये नहीं बताना है कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हो. मैंने एक एग्जांपल पढ़ा था, टास्क 1 में किसी ने सबमिट किया है, उन्होंने लिखा है स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड दी मैनेजमेंट कंसेप्ट, something like that. That will be indicating like learning process. We have to more focus on learning products in place of learning process. Is the CO stated at proper level of generality and relative independent of other COs? There will be, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही टॉपिक हर CO में कवर हो रहा हो या रिफ्लेक्ट हो रहा हो. That is the CO attainable in given context. वो CO जो है वो attainable होना चाहिए given context के उसमें. This is the checklist which you have to follow for CO formation. I hope so. Now you are clear about the CO formation, because one of the most important parameter is CO formation. Now I am starting today's session. The today's session is start from CO-PO mapping and correlation, or we can say alignment, and the Bloom's taxonomy and AICT exam reforming policy. So this is the today content start. This is the first slide for today content, that is tagging of the CO, tagging of the CO with PO, PSO, consecutive level, knowledge category, number of class, laboratory, field session associated with the CO. जब भी हम CO डिफाइन करते हैं, तो we have to map और tag the CO with following thing. अब ये कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट 10 स्लाइड्स में आप समझेंगे. We have to map, or we can say tag, or we can say correlate, or we can say align the CO with 5 things. One is PO, that is program outcome. Another one is PSO, program specific outcome. Consecutive level, that means Bloom's taxonomy. Knowledge category may or may not optional, you can consider. Number of classes required for theory or lab or field session with particular C. Now I am going in detail for this slide. Tagging of COs with class session, that different COs may require different number of class sessions. For example, I am teaching a subject, say statistics, and I have defined 5 COs.
first CO we required 8 number of classes. For second CO we required 7 number of classes. For third CO we required 9 number of classes. So we have to form a table in which we mention CO and number of sessions required for that CO. Now, in one column, we have to mention CO1, CO2, CO3, CO4, and in next column, we have to mention number of sessions or number of class required to cover up that CO. And tagging with consecutive level. ये consecutive level क्या होता है? ये मैं डिटेल में बताऊंगा. This is Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy जो है अभी next few slides में हम start करेंगे. तो हमको CO को मैप करना पड़ता है with consecutive levels. That means Bloom's level के साथ. Just for overview, there will be a Bloom's level like remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Then tagging of the CO with knowledge category. This will be optional part. You can categorize. You can tag or you can escape this part also. But if you can tag, it is more better option. Tagging the CO with knowledge category. And then finally tagging the CO with PO and PSO. Now I am going detail in for how you tag the CO with PSO and PO. How you map or correlate the CO with PSO and PO. So all the course of curriculum typically address the same PSO because the PSO are very specific. You have already in yesterday class you understand that PSO will be only 2 or 4 in number. So in any subject if we have 5 COs, the 5 COs almost will be addressing the PSO. More focus on PO. The PO 1, 2, 3, 4, and 5. It's morely the PO 1 is maximally matched with the CO because it is very generic CO, that is basic knowledge of engineering or basic knowledge of your respective field. तो बेसिक नॉलेज जनरली हम हर किसी को देते हैं, इसलिए PO1 जनरली मैप्ड ज्यादा होता है हमारे CO से. PO2, 3 and 4 and 5 आर अगेन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, मे बी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो, मैनेजर प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो और एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एड्रेस करता है. Then PO number 7, 8, 9, 10 and 11, these are generally not addressed by the subject. These are addressed by using some activity, like you can conduct environmental based activity. Like you can conduct a course based on professional ethics. Like you can conduct a project based and evaluate the teamwork or individual work. Like you can conduct internship based on that internship presentation. You can mark the communication of the student. Like you can conduct the minor major projects and then you can mark the project management and finance. So PO 7 to 11 is moreover based on the activity or minor major or internship based evaluation. And PO 6 and PO 12 are generally addressed by using outside of your curriculum. That will be lifelong learning through some career, some competitive exam, or you can say you can evaluate using alumni feedback, or you can say you can evaluate using after passing out your student from 3 to 5 years of down the side. So we have to understand again this point that हमने CO को फॉर्म कर लिया, CO फॉर्मेशन हमारा कल बन गया, CO बनाना आपको आ चुका है जिसको आपने 5 स्टेटमेंट या 6 स्टेटमेंट में फॉर्म कर लिया. अब उस CO स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, टैग और मैप करना है. किससे टैग और मैप करना है, तो 5 चीजों से मैप करना है. पहला, कितनी क्लासेस रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर CO को कवर करने के लिए. ऐसे जितने नंबर ऑफ CO है उसके आगे आपको नंबर ऑफ क्लासेस लिखना है. सेकेंड होता है कॉन्जुगेटिव लेवल मैपिंग. कॉन्जुगेटिव लेवल मैपिंग को ब्लूम्स लेवल मैपिंग कहते हैं, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट है PO एंड PSO मैपिंग. तो PO और PSO मैपिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल हमने देखा था PO जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 12, मैक्सिमम 12 हो सकते हैं. अब आपको मैं बोल रहा हूँ जो PO नंबर 1 है वो मैक्सिमम CO से मैप होने वाला है, भले से आप किसी भी कोर्स की बात करें, क्योंकि PO1 जनरल है. जनरल मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ योर रिस्पेक्टिव फील्ड, तो वो तो 100% स्टूडेंट को मिलना ही है. देन PO2 से लेकर PO5 तक जो है वो PO जनरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ योर फील्ड बताते हैं, तो वो जनरली फ्यू सब्जेक्ट से मैप होंगे या एड्रेस होंगे. एंड PO 7, 8, 9, 10, 11 जो है वो जनरली कैसे एड्रेस करेंगे, या तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे इसके, जैसे लाइक प्रोफेशनल इथिक्स का सब्जेक्ट डाल दिया आपके सिलेबस में, या एनर्जी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट डाल दिया आपके सिलेबस में, या फिर इनको समझने के लिए आपको एक्टिविटी कंडक्ट कराना पड़ेगा. एक्टिविटी कैसे कंडक्ट कराना पड़ेगी, एक्टिविटी जो आप जैसे वेबिनार करा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं, आप कोई FDP करा रहे हैं, या आप कोई
वर्कशॉप करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, इंटर्नशिप करा रहे हैं, ये उनसे मैप्ड होते हैं। और लास्टली 6 और 12 जो होते हैं वो भी करिकुलम के बाहर जाके ही मैप्ड होते हैं। तो उसको हम या तो एल्यूमिनी सर्वे से फाइंड करेंगे या प्रोग्राम एग्जिट सर्वे से फाइंड करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो आपने समझा दिया कि हमारे पास जो 12 है उनको हम कैटेगरी कैसे कर सकते हैं, ये एक जस्ट ओवरव्यू है उसको मैपिंग करने का, पर मैपिंग करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस शोज पीओ सीओ रिलेशनशिप, कि आखिर मैपिंग करना कैसे है, मैपिंग को करने के बाद आगे की स्टेप्स क्या होती है। तो मैपिंग करने के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, तो आप यहाँ से इस स्लाइड से वो समझने की कोशिश करिए। Each CO can identify to address a subset of POs। पहली चीज बहुत क्लियर रखिए कि PO का CO जो है वो सबसेट है PO की, मतलब हमने जो कोर्स आउटकम बनाए वो कहां से निकले हैं, PO से ही निकले हैं। अब based on the number of COs and session dedicated to them, it is possible to identify the strength mapping 1, 2, 3. What is this strength mapping to 1, 2, 3? I will give you detailed in next slide. This is the 1, 2, 3 means. सपोज करो आपने एक कॉलम में लिखा CO 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे आपने रो में लिखा है ऊपर की साइड पे, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने वर्टिकली लिखा है CO 1, 2, 3, 4, 5, हॉरिजॉन्टल लिखा PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 up to PO12, PSO1, PSO2, PSO3. You have to map CO and PO. आपने CO नंबर 1 पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लगा कि यार इससे तो मैं बेसिक नॉलेज ही कर पा रहा हूँ एक्वायर बच्चों के अंदर, तो यू हैव टू मैप विद PO1। नाउ मैपिंग हैविंग 4 लेवल, यदि कोई उसमें आपस में रिलेशन नहीं है या वेरी स्मॉल रिलेशन है या वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसको डैश करते हैं, जीरो नहीं करते, ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको उसको डैश करना है या ब्लैंक छोड़ देना है। यदि उसके साथ उसका कोई रिलेशन है, पर रिलेशन के 3 लेवल है, यदि रिलेशन वेरी स्मॉल लेवल पे है तो 1 नंबर, रिलेशन मीडियम लेवल पे है तो 2 नंबर, एंड रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे है तो वी हैव टू पुट 3 नंबर। दिस 3 1 2 3 इज आर कॉल्ड एज लेवल ऑफ आप लेवल डिफाइन कर रहे हो आपकी मैपिंग के। 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, 2 इज मीडियम एंड 1 इज वेरी स्मॉल। एंड यहाँ पर जीरो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर मैपिंग नहीं है, वहां डैश या उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आप देखिए इधर मैंने एक पूरे कॉलम में CO1 से लेकर CO7 तक एग्जांपल में लिख दिया है, और इस साइड मैंने ऊपर की साइड लिखा हुआ है, आप देखिए जब हॉरिजॉन्टल लाइन में PO1, PO2, PO3, PO4 ऐसे अप टू PO12 तक। अब मुझे CO1 को रीड करके ये डिसाइड करना है कि वो PO1 से रिलेटेड है या नहीं है। अब कैसे डिसाइड करेंगे रिलेटेड है या नहीं है, बेस्ड ऑन आपने जो CO फॉर्मेशन करा उसके बेसिस पे आपका जो नॉलेज की लर्निंग आउटकम है उससे आपको पता चलेगा कि वो मैप्ड होता है या नहीं, वो मैप्ड कितना हो रहा है। यदि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल मैपिंग बहुत परफेक्टली है तो वी कैन पुट 3, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैपिंग। यदि आपको लगता है कि नहीं ये मॉडरेट टाइप का मैपिंग है तो यू कैन पुट 2। यदि आपको लगता है कि नहीं ये मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम है, यू कैन पुट 1। और यदि आपको लगता है इसमें मैपिंग ही नहीं है तो यू कैन पुट डैश, डोंट पुट 0। ये आपको अपने सब्जेक्ट में करना है। ये आप जब करते हैं तो इसको बोलते हैं CO-PO मैपिंग। एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, द CO-PO मैपिंग मस्ट बी जस्टिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टी ओनली। आपने 3 लिखा या 2 लिखा, इस पे क्वेश्चन सिर्फ आपसे ही पूछा जाएगा, आप कोई और इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ही जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव पुट 3 और व्हाई यू हैव पुट 2। तो सिंपली इसलिए आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये है कि ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने किस लेवल पे मैप किया है उसको। तो नॉलेज जिसको आप लर्निंग आउटकम बोलते हो इसमें सिंपल टर्म में, उससे आप जज कर पाते हैं कि वो किस लेवल की मैपिंग पे जाएगी, उसके थ्रू आप इसको मैप करते हैं। आप जब इसको मैप कर लेंगे आपके सब्जेक्ट में तो डिपार्टमेंट लेवल पे जो आपके हेड होंगे उनको एक कंप्लीटली समरी बनाना पड़ेगी, कंबाइंड समरी, समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोग्राम CO-PO मैपिंग। सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट का मैपिंग करा जो सिंपली एक पर्टिकुलर कोर्स का है या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, जिसमें 4, 5, 6, 7 CO है, जिसको आपने PO1 से लेकर PO12 तक मैपिंग कर दी। मैपिंग करने के बाद ये हेड या आपका जो भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है वो कलेक्ट करेंगे, और इनको कलेक्ट करने के बाद सबको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए वो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे।
This is called CO-PO relationship for the entire program. जो भी आपके कोर्सेस है, आपने कोर्सेस के नीचे सारे कोर्स लिस्ट आउट कर दिए. सपोज से फॉर एग्जांपल 40 कोर्स है, तो आपको 40 बार ये लिखना है. देन आपको CO1 से लेकर CO1 CO2 जो भी आपके COs है वो मेंशन करना है. देन PO1 से लेकर PO12 तक जो उन्होंने मैपिंग करी है 3 to 1 में, वो मैपिंग एज इट इज यहाँ पर पेस्ट करना है. दिस इज कॉल्ड CO-PO रिलेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग द सेशन. आपको ये करके रखना रहता है. ये आप जब सेशन पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे, क्लास में जाएंगे, ये उसके पहले की पार्ट है जो आप कंप्लीट करके रखेंगे, जिसको आप CO-PO मैपिंग कहते हैं. और इसको मैपिंग करने के लिए आपको 3 लेवल दिए हैं, 1 2 3 लेवल. 1 मीन्स वेरी स्मॉल, 2 मीन्स मीडियम, 3 मीन्स स्ट्रॉन्ग. इन तीनों को आप जब मिला के मैपिंग करते हैं तो इस मैपिंग को CO-PO मैपिंग बोलते हैं. और डिपार्टमेंट लेवल पे वी कंबाइन ऑल द कोर्सेज एंड create the department or program level CO-PO relationship. I hope so CO-PO relationship department level compilation आपको समझ में आया हो. Now question finally, as I told you that there will be a 5 type of tagging. One is called PO, PSO. Next one is called number of lectures. Next one is knowledge category address. Knowledge category address is optional, and if you want to understand knowledge category, then you have to take another a different session for that, because there will be 8 different types of knowledge category. Then there will be a Bloom's level. जब आप ये सब डिफाइन कर देते हो तो in the end you have to create this combined table. In one column you mention your CO, that understand the fundamental of fluid mechanics and fluid, determine the basic equation to find the force of submarine surface. ये just like an example है. Or then we have mentioned PO or PSO mapping, that the CO1 is mapped with PO1 and PSO1. Then CL, what is CL? That is conjugative level. Now I am going to detail in conjugative level in next slide. Then what is KC? That is KC is called knowledge category. And then class or session, required session or class कितने आपको required है for CO1. To cover up the CO1, it requires 6 lecture. CO2, it requires 9 lecture. For covering up the CO3, it's required 12 lecture, and so on. The total lecture or total hours of the instruction will be 54. So based on these, we can change our planning of the session. This will be planned before starting of the session. Now I am going to detail about the Bloom's level. That is, what is this CL? I already covered what is PO and PSO. Now I am moving towards the CL. Yes, please. Sir, I just want to ask one question. Yes, ma'am, please. Yeah. So I just want to ask, as you were referring to the CO-PO mapping first at the course level and then at the departmental level. So, for example, for some course of mine with the program mapping, I have given the rating as 2. That is coming at moderate. But when it would be done at the departmental level, I'm just finding it like how it would be integrated. Like somewhere you have given 1, 2. Then when it comes at the departmental level, that means for one program, that means, for example, it is BSc. So for one BSc per semester, there is going to be minimum 6 or 7 subjects. That's a course. Okay, ma'am. So how this would be a little integrated? Like, won't it be so complex? That's how to do? No, ma'am. Firstly, I will clear that at department level, there will be no mapping. It will be just combine the data which will be created by the respective faculty member. Suppose you are taught one subject in first semester. I am teaching another subject in first semester. The department will just combine and merge this mapping. They have not able to change that mapping, because the mapping will be only depending on respective subject faculty. Okay. So the department level is just compiling that mapping just because they want to assist, or they want to find the attainment in the end of the semester or in the end of the year. So at the time of that means in one program, if there are 36 courses inside, so it would be just like an integration of those 36 divided into different semesters, and just whatever the teacher has written, that would be written. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The complete right for mapping is depend on the respective subject faculty, because the thinking level of the faculty is different. So the mapping level of the faculties may vary.
but the justification will be depend on only on the respective subject faculty. It may possible I am marking 3 and you will mark 2 for particular same CO1 and PO1. But you have to justify your mapping only based on your experience. In the end, I will show you how the justification can be written for COPO mapping. All right. Thank you, sir. Okay. Shall I continue? Yes, please. Thank you. Okay. And this will be the finally main we can say the main table for outcome based education. And in this table will be prepared before starting of the session. We have already discussed about PO and PSO mapping. Now we are moving towards CL. What is this CL? This is called consecutive level. We can say in more detail, that is Bloom's taxonomy. And then next will be KC, that is knowledge category. We can escape knowledge category, but the knowledge category I already highlighted that there will be 8 different types of knowledge category, and we have to map that particular knowledge category with CO. And in the last column, that will be mentioned number of classes. Now I am more detail in the Bloom's taxonomy, because the Bloom's taxonomy is very important for outcome-based education. Without Bloom's taxonomy, we cannot attain or find the attainment of the CO and P. So please, the Bloom's taxonomy, please try to understand Bloom's taxonomy in more detailed way, so you can plan your question paper based on Bloom's taxonomy, and you can evaluate your CO, and in the end you can find attainment of the COs. Now there are the 3 education goals, or we can say 3 domain of education goals, or we can say there are the 3 Bloom's level. What is this 3 Bloom's level? One is suppose I am the I can take example on myself. My head will be 1, my mind will be my 1 Bloom's level. Second will be my hand or my leg, that I can explain through hand or I can explain through leg. That will be second level. And third will be my heart. I can explain not by mind, through my heart. These are the 3 level of learning, we can say, or we can say 3 Bloom's level. One is called the head will be correlated with consecutive level. The head will be related to consecutive level. The hand gesture or leg gesture will be correlated with the hand gesture, and will be correlated with the pyromotor level, and the heart will be affective level. These are the 3 level, we can say 3H, जो कि basically 3 domain of education goal है, or we can say 3 different domain है Bloom's level के. The more focus as per AICT exam reforming is only and only on consecutive level. But if we can go in more detail, then we can focus on rest of 2H also. But the main focus will be according to AICT exam reforming will be in a consecutive level. Now, what is this level? Learning level. Consecutive level having different levels of learning. One is called lower order, another one is called higher order. Affective level is also having some different lower order and higher order. And piezomotor having, or we can say skill level having, again there will be some low order and higher order. I am going more detail in consecutive level, because the consecutive level is must required to implement in the subject for attainment of the CO. Now the new Bloom's revised taxonomy is already come. This consecutive level is having, the old consecutive level having this level: evaluation, synthesize, analyze, application, comprehensive, and knowledge. Now the new Bloom's revised taxonomy will be this. We are focusing only on this revised Bloom's taxonomy, because nowadays this revised Bloom's taxonomy is one of the most important parameter for mapping your CO, for mapping your question paper, for mapping your assessment tool. They have this Bloom's revised taxonomy having total 6 different level. Out of 4, above 4 level are called higher order thinking. इसको short में HOT भी बोलते हैं, hot. That will be higher order of thinking निकलता है उससे students का. और नीचे के जो 2 level है, that will be called as lower order thinking. That is called LOT. What are these Bloom's revised taxonomy? There are the total 6 part. One is called remember. Remember means what? Recalling the information. मैंने आपको कुछ law पढ़ा है, आपने उसको याद करके वापस बता दिया. मैंने आपको कोई थ्योरम पढ़ाई, आपने उसका स्टेटमेंट याद करके वापस बता दिया. That is called remembering.
Second will be remembering is just simply we going to say recalling of the information. Second will be called understanding. Understanding means explain idea और concept. मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप समझ के अपनी भाषा में वापस मुझे समझाइए. That is called understanding. So first is remembering, that is called R. Second one is called understanding, that is called U. That is explaining idea or concept. Third is applying. Applying means what? Using information in another familiar situation. आप जो सीख रहे हो उसको आप अप्लाई करोगे पर डिफरेंट केस स्टडी में अप्लाई करो और डिफरेंट सिचुएशन में सिमिलर फैमिली सेम टाइप ऑफ सिचुएशन में अप्लाई करो पर डिफरेंट अनदर कैटेगरी. दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग. whatever you have understand you can apply that understanding level को आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई कर. Fourth will be analyzing. Analyzing means breaking information into part to explore, understand and relationship. आपने अपनी इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करा और उसको एनालाइज करा, आपने अप्लाई कर दिया. आपने क्या करा, सबसे पहले कुछ चीज मैंने आपको समझाया, सपोज करिए रोबोटिक्स, या मैंने आपको समझाया डेटा साइंस का एक कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल आर्ट सॉफ्टवेयर. आपने समझा, उसको पहले या अंडरस्टैंड करा, फिर आपने खुद ने अप्लाई करा और फिर आपने उसको एनालाइज करा कि बेसिकली आप उस चीज को कर पाए या ना कर पाए. तो एनालाइज करने के लिए आपने उसको ब्रेक करा इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में और एक्सप्लोर करा अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन. नाउ देन जो आपने एनालाइज करा फिर उसको आप इवेल्युएट करते, जस्टिफाई अ डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन. यू हैव टू इवेल्युएटिंग करना है कि बेसिकली जो एनालाइज हुआ उसके बाद उसका इवेल्युएटिंग करा. और इन दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के एनईपी के अकॉर्डिंग है, वो है क्रिएटिंग. अकॉर्डिंग टू एनईपी only one thing will be required, that will be innovation and innovation from the education. And the innovation comes only by creating. आप जनरेट करें न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू वे ऑफ व्यूइंग थिंग. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रिक्वायर्ड है उसके लिए, उसी को एनईपी ने हाईलाइट किया है. दैट इज only and only requirement of NEP, that will be innovation. Innovation comes by evaluating or creating. The upper HOT जो है hot higher order thinking जो level है ब्लूम्स के, वो one of the most important level है for the innovation. Now I am going to more detailed in the Bloom's level. First will be that is remembering. I already told that remembering is nothing. The learning is able to recall, restate, remember, learn information. Please understand properly, because the next task is simply you have to prepare question paper and map the question paper with this Bloom's level. आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 कौन से ब्लूम्स लेवल को इंडिकेट कर रहा है. टोटल 6 लेवल है, L1, L2, L3 ऐसे करके टोटल 6 लेवल अपन अज्यूम कर लेते हैं. ये रिमेम्बरिंग लेवल 1 है, अंडरस्टैंडिंग लेवल 2 है, अप्लाइंग लेवल 3 है, एनालाइजिंग लेवल 4 है, इवेल्युएटिंग लेवल 5 है, क्रिएटिंग लेवल 6 है. आपने एक क्वेश्चन पेपर बनाया, उस क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आपने डाला, बताइए वो कौन से लेवल को इंडिकेट कर रहा है. वो कब बता पाएंगे, जब आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे. तो ये नेक्स्ट टास्क आपका जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जब तक आप इसका लेवल नहीं डिसाइड करेंगे आप उसकी मैपिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई आई एम मोर फोकसिंग ऑन लेवल ऑफ ब्लूम्स लेवल. द रिमेम्बरिंग मींस द लर्नर इज एबल टू रिकॉल, रीस्टेट और रिमेम्बर लर्न इंफॉर्मेशन. जो हम यहाँ पर वर्ड्स यूज करते हैं, फाइंडिंग, नेमिंग, लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइबिंग. कुछ एग्जांपल भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चंस के. व्हाट हैपेंड आफ्टर, हाउ मेनी, व्हाट इज, कैन यू नेम, फाइंड द डेफिनेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड आफ्टर. ये हम जनरली व्हिच इज फॉल्स और ट्रू, ये जनरली हमारे क्वेश्चन के वर्ड्स होते हैं. यदि हमने ये वर्ड्स लिखे, दैट मींस दिस इंडिकेटिंग द रिमेम्बरिंग लेवल. यदि आपने ये वर्ड्स यूज करे अपने क्वेश्चन में, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आप रिमेम्बरिंग की बात कर रहे हैं, कि बच्चे स्टूडेंट ने जो आपने समझाया उसको याद करके लिखना है. दैट इज मीन दैट द स्टेटमेंट विल बी रिकॉल और रीस्टेट द इंफॉर्मेशन, लर्नड इंफॉर्मेशन. So these are the some few example of the questions from the remembering. I hope so. Remembering is very clear that remembering means recalling the information, just simply. Next will be the understanding. Understanding means the learner grab the information. Learner grab the meaning of the information by interpreting and translating what has been learned. उसने जो भी सीखा वो उसको इंटरप्रेट करे, ट्रांसलेट करे अपनी भाषा में. दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग के जो वर्ड्स जनरली होते हैं वो क्या होते हैं, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग, समराइजिंग. ये these are the few words for understanding. Understanding means just simply
जस्ट सिंपली जो भी समझाया जा रहा है अपने वर्ड्स में लिख पा रहा है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग. इसके कुछ एग्जांपल होते हैं क्वेश्चंस फॉर अंडरस्टैंडिंग. दैट विल बी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, कैन यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, कैन यू राइट अ ब्रीफ आउटलाइन, व्हाट डू यू थिंक could have happened next, who do you think, what was the main idea, can you classify, clarify, can you illustrate, does everyone act in the way that. These are the few questions of understanding. Again, I am recalling. First will be remembering. Remembering means recalling the information. Understanding means explain idea or concept in your own language. Explain idea or concept in your own language. Third will be applying. जो भी आपने समझाया उसको वो अप्लाई कर पा रहा है क्या. द लर्नर मेक यूज द इंफॉर्मेशन इन द कंटेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम वन इन विच इट वाज लर्न. मैंने अभी आपको आज की सिचुएशन में जो समझाया, इसी चीज को आप किसी और सिचुएशन में जाके अप्लाई कर पा रहे हो. दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द नॉलेज. दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग कंडीशन. इसके जो फ्यू एग्जांपल है, यूजिंग, कैरी आउट, एग्जीक्यूटिंग, इंप्लीमेंटिंग, दिस आर दी अप्लाइंग कंडीशन. हम जनरली यदि कोई कंप्यूटर साइंस से हो तो हम जनरली बोलते हैं एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम. दैट मीन्स द स्टूडेंट विल अप्लाइंग द नॉलेज. दैट विल बी अप्लाइंग. डिटरमाइन द roots of the equation. That means you are applying the knowledge. That will be called determining the roots of the quadratic equation. Determine the something. So that means applying the knowledge. So applying means hota hai whatever we have learned, that will be applied in different situations, different similar situations but different contexts. Few questions of applying are: do you know of another instant where? Can you group by characterizing such as which factor would you change if, what question would you ask of, and so on. Now the next one is analyzing. The learner break learned information into parts to best understand that information. This is called as analyzing. Comparing, organizing, deconstructing, outlining, finding, structuring. These are the few words that will be used in analyzing. And these are the few questions for analyzing. Which event could not have happened? If happened, what might the ending have been? How is similar to? Why did change occur? And so on. These are the analyzing. Again, we can recall we have learned 4 learning level. One is remembering, recall the information. जो भी पढ़ा उसको recall करिए. Understanding, जो भी आपने समझा उसको explain करें अपनी भाषा में. Applying, using information in another familiar situation. जो आज सीख रहे हैं उसी सेम कंसेप्ट को अप्लाई करिए दूसरी कंडीशन में, दूसरी सिचुएशन में, सिमिलर टाइप. Analyzing means break the information into part, explore, understand, and find the relationship between them. This is called applying. Now next one will be apply. After applying, the next will be the evaluating. Evaluating means the learner make decision based on in-depth reflection, criticism, and assessment. Finally, जब आप उसको evaluate कर रहे हैं तो 100% assessment तो आना ही है. So the learner make decision. वो किसके basis पे decision लेगा? Based on in-depth reflection and assessment. Few keywords are testing, monitoring, determine, and so on. And the few questions for evaluating will be: is there a better solution to? Judge the value. What do you think about? And so on. Now the last one will be is creating. The learner create new idea information using what has been previously learned. उसने जो सीखा उससे कुछ नया innovation thinking या नया idea create कर रहा है. That will be called creating. This is just creating a new idea. This will be like planning or making something new. The question like, can you design something for me? Can you design for something for me? Or we can say, can you create new or unusual uses of for that? Can you develop a proposal which would be how many ways you can represent? What would happen if this? Why does not like that? Some questions can be based on creating. Now we can conclude all 6 again. What are the 6 Bloom's level? The 6 Bloom's level, first is remembering, recall the information. Second one is understanding. Understanding means explain idea or concept in your language. Applying,
using information in another familiar situation, analyzing, breaking the information into parts and explore understanding, evaluating, justifying a decision, or we can say we can conclude some decision based on the course of action, and finally creating, generating a new idea or product or way of viewing things, or we can say out of box thinking. These are the Bloom's consecutive level. Based on this Bloom's consecutive level, we can map our or we can tag our COs like remembering, we can say one Bloom's level, understanding another Bloom's level, applying another Bloom's level, and we can map with CO and POs. How we can map them with CO and POs? You can look at this table like this. You can see the column number 4. There will be CL. We put U. U means understanding. That means understand the fundamental fluid mechanism and the fluid. That means this level of Bloom's level will be understand. Determine. Determine means the level will be applied. So that's why we write AP. Now calculate. Again, calculate will be the level of apply. So we put AP. The calculate flow parameter using fluid flow. Again, the calculate is the important word, action verb. So we again come up at AP. That means apply. Again, in the last calculate, then again it comes to the AP. That means apply. So based on this Bloom's level, you have marked or tagged your CO at different Bloom's level. And after marking this Bloom's level, you can move towards the assessment process. I hope so. Bloom's level are clear. The Bloom's level, the upper 3 level, creating, evaluating, and analyzing, generally assist by projects, mini projects, minor projects, and something like projects or internships. And the lower 4, that means remember, understand, apply, or analyze, are generally evaluated through fixed hours exam, or we can say Q's, assignment, or any continuing assessment tool. Now it's again a quiz time. Whatever I taught for Bloom's level, you are just to reply in the chat box. I hope so you can understand better through this quiz. If Bloom's revised taxonomy, analyzing, evaluating, and creating are on what level? First, it's at higher order thinking skill, or it's lower order thinking skill. Yes, please. What is the doubt? Please unmute yourself and you can ask. Sir, you have said that comparing is there in understanding, and comparing was also there in analyzing. Few keywords are common, but we have to understand the meaning, because we can compare. We can use comparing word for 2 Bloom's level, but what is the key outcome? What is the learning outcome after that keyword? It's again a very important. That's why we have to put a few keywords in both the category, but based on their outcome, based on their what we are asking, what we are expecting from comparing, then we can conclude at which Bloom's level we have to put. Okay. In meantime, please reply this question that in Bloom's revised taxonomy, analyzing, evaluating, and creating are at what level? It's basically at a higher order level, thinking level, or it's lower order thinking level. I think absolutely right. It's a higher order thinking level. In general, we can call it as HOTS, that is HOTS. Please remember, in Bloom's level, many times anyone can be asked what is HOTS and what is LOTS. So HOTS means that the analyze, evaluate, and creates are called as HOTS, that is higher order thinking skill. Which of the following description works best for taxonomy level of remember? Can anyone tell the answer? Remember से क्या समझ में आता है आपको? ये ऑप्शन है A, recalling information, B, make sense of the information, C, use information in new or similar situation. आप रिमेंबर से क्या समझते हैं टेक्सोनॉमी लेवल में? रिमेंबर क्या करता है? रिकॉल करता है इंफॉर्मेशन को, सेंस करता है इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन में पुट करने के लिए बोलता है. Yeah, absolutely right. It's just a recalling the information. I am again and again focusing on remembering, understanding, because the next one of the most important keys is mapping your CO with Bloom's level. Now the next question is, which of the following describe work best for the taxonomy level of understanding?
Can anyone tell what do you mean by understanding? अंडरस्टैंडिंग क्या करता है? फाइंड इंफॉर्मेशन करता है, मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन करता है, या यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन करता है? अंडरस्टैंडिंग से आप क्या समझते हैं? अंडरस्टैंडिंग में आप से इंफॉर्मेशन फाइंड कर पा रहे हैं, मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कर पा रहे हैं, और यू कैन से यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन में कर रहे हैं. Yeah, it's absolutely right. That will be the make sense of the information. I already told you that understand means that you have to understand and present in your own language. Make sense of the information. That will be understand. Now the next will be different verbs are used for different taxonomy level. Which level corresponding to verb calculate? Can anyone tell calculate किस level को indicate करता है? कैलकुलेट क्रिएट के लिए काम आता है, कैलकुलेट अप्लाई के लिए होता है, कैलकुलेट अंडरस्टैंड के लिए होता है, कैलकुलेट रिमेंबर के लिए होता है. Yes, it's absolutely right that calculate means that it will be applicable to apply. Generally we are using calculate and determine. That's why I'm taking the example of calculate and determine. Calculate and determine both indicate the apply condition. That means our question paper are already at third level of Bloom's. We don't know that we are already asking the student question from third level of the Bloom's level. Now this is all about the Bloom's consecutive level. There are the three types of learning level. Bloom's में 3H होते हैं. One is the head, heart and hand. We are understand about the consecutive level. Consecutive level आपने अभी समझा है. Now we are moving the second topic of the today's session. That will be assessment tools. How you can assess the PEO, how you can assess the PO, how you can assess the CO, because it is most important. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए PEO होता क्या है. नेक्स्ट हमको ये पता होना चाहिए उस PEO को असिस्ट कैसे करेंगे, कैसे हम उसका अटेनमेंट निकालेंगे. So that means assessment tool is one of the most important for PEO. As already I told you, PEO means program education objective. It will be achieved after ग्रेजुएशन और 3 to 5 years ऑफ ग्रेजुएशन. बट हाउ यू असिस्ट? आपको कैसे पता चलेगा कि वो अचीव हुआ या नहीं हुआ? तो इसको अचीव करने के लिए हम 4 चीजों का यूज करते हैं. एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्टरी सर्वे ईयरली लेना चाहिए, एल्यूमिनी सर्वे हमको ईयरली लेना चाहिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड हायर एजुकेशन रिकॉर्ड. यदि हम ये चारों चीज हमारे पास रखेंगे तो पीईओ को हम असिस्ट कर पाएंगे. ध्यान रखिएगा कि आपको पीईओ को असिस्ट करना है तो आपको 4 चीज ध्यान रखना है. क्या चीज ध्यान रखना है? चारों. आपको एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्टरी सर्वे लेना है ईयरली, आपको एल्यूमिनी सर्वे कराना है ईयरली, आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड हायर एजुकेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करना है. यदि आपने इन चारों चीज को मेंटेन करा तो पीईओ को आप असिस्ट कर पाओगे. The data may be collected progressively. The survey questions should, आप प्लीज इस चीज को समझना कि सर्वे क्वेश्चन डायरेक्टली पीईओ मत लिख देना. That will be reframed in your own language so that a student can understand the question and reply properly. Just like ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा PO1 हमारा एल्यूमिनी सर्वे का पहला क्वेश्चन, उसको रीफ्रेम करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. तो 4 चीज से हम पीईओ का असेसमेंट करते हैं. नेक्स्ट पीओ का असेसमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 7 तरीके हैं. वन इज एंड ऑफ द कोर्स सर्वे, मतलब आपने जो पढ़ाया उसके एंड में. अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सर्वे मैंने क्वार्टरली लिखा है, पर किसी यूनिवर्सिटी में क्वार्टरली हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, किसी में हाफ ईयरली में होता है, किसी का एनुअली होता है. जब भी आपका सिलेबस खत्म हो उसके एंड में आप एक सर्वे कराओगे जिसको कोर्स सर्वे बोलते हैं. कोर्स सर्वे से आप पीओ का असेसमेंट कर सकते हो, पहला. दूसरा, जो आप पढ़ा रहे हो आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो मिलेगी मुझे, उससे मैं कर सकता हूँ. इवैल्यूएशन रिपोर्ट मतलब क्या? आपने पढ़ाया सब्जेक्ट, उसमें आपने स्टूडेंट का असेसमेंट करा. असेसमेंट कैसे करा? आपने क्यूज कराया, असाइनमेंट करा है, उसकी जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसके थ्रू भी मैं पीओ का असेसमेंट करूंगा. तीसरा, मैं डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट से भी करूंगा. डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट से कैसे करेंगे? डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी कराई है, डिपार्टमेंट ने एक सपोज से वेबिनार कराया, वो भी मशीन लर्निंग पे, तो उस वेबिनार का क्या इम्पैक्ट था, उस वेबिनार से क्या फायदा मिला कॉलेज को, वो पीओ असेसमेंट में जाता है. तो तीसरा होगा डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट. चौथा, फोर्थ है स्टूडेंट एग्जिट सर्वे. जब स्टूडेंट कॉलेज से पास हो रहे हैं तो उनका सर्वे.
पांचवा है एल्यूमिनी सर्वे। एल्यूमिनी सर्वे तो अपन ने पहले भी लिया था पीईओ में, यहाँ भी काम आता है। एंड सिक्स्थ है एल्यूमिनी एडवाइजरी बोर्ड। ये ऑप्शनल है, यदि आपके यहाँ फॉर्म हो एल्यूमिनी एडवाइजरी बोर्ड तो आप उसका सर्वे करा सकते हैं, नहीं फॉर्म है तो एल्यूमिनी कमेटी या एसोसिएशन हो उसका सर्वे ले लीजिए, वो भी कंसिडर कर लीजिए। देन स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी, ये भी आपके ऊपर है कि आपका स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी फॉर्म है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंसिडर करें। बट टॉप 4 स्टार्टिंग के 4 और 5 मैंडेट है। देन आपके पास ऑप्शनल है कि आपके यहाँ पर वो चीज एग्जिस्ट करती हो तो आप कराइएगा, नहीं तो आप उसका स्किप कर दीजिए। बट आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपने एंड कोर्स सर्वे नहीं कराया, वो मैंडेट है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने मेरे सब्जेक्ट में क्यूज और असाइनमेंट दिए ही नहीं, वो मैंडेट है। आप ये नहीं बोल सकते कि डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी कराई है हमने उसको इवेल्युएट ही नहीं करा, वो मैंडेट है, करना ही पड़ेगा। आप बच्चे जब पास हो रहे हैं तो आप एग्जिट सर्वे नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। और एल्यूमिनी सर्वे भी मस्ट है, इसलिए टॉप 5 इज कंपलसरी फॉर पीओ असेसमेंट टूल। नाउ द नेक्स्ट इज सीओ असेसमेंट टूल। द सीओ असेसमेंट टूल विल बी अगेन फर्स्ट इज सेम द एंड कोर्स सर्वे, देन स्टूडेंट कमेंट्स। स्टूडेंट कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीओ असेसमेंट में। यदि कोई कमेंट या रिमार्क दे रहे हैं सर्वे में तो वो आपको कंसिडर करना है। देन रूब्रिक्स, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड। rubrics I will cover after 2 or 3 slides what is rubrics. Then internal assessment and home assignment. आपने जो भी इंटरनल असेसमेंट करा, आपने होम असाइनमेंट किया, क्विज कंडक्ट कराया, जैसे अभी मैंने आपको एक टास्क दिया था स्टार्टिंग में ग्रुप टास्क, व्हाट इज एक्शन वर्क, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज कंडीशन, वो आपने परफॉर्म करा, दिस इज माय इंटरनल असेसमेंट। फिर मैंने आपसे क्विज कंडक्ट करवाया तो दिस इज माय इंटरनल असेसमेंट। फिर मैंने आपको टास्क 1 दिया, दिस इज माय होम असाइनमेंट। क्यों करा ये सब? क्योंकि ये मेरा असेसमेंट टूल है, वेदर मैं आपको आज जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो पढ़ पा रहे हो कि नहीं आप। दिस आर माय लर्निंग एक्टिविटी, बेस्ड ऑन योर मार्क्स मैं उसको असिस्ट करूंगा और फाइनली मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा 3 डे का सेशन कितना सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट विल बी सेमेस्टर एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड कोर्स परफॉर्मेंस। कोर्स परफॉर्मेंस इज नथिंग, इट इज जस्ट सिंपली अ एंड सेम रिजल्ट। Now the combined summary of the assessment method is in front of you. This is one of the important slides because our topic is outcome based education and attainment of CO. For attainment of CO you must understand this slide. और किस चीज को कब असिस्ट करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, किस लेवल पे असिस्ट होता है। वन इज पीईओ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीईओ को असिस्ट करने के लिए क्या क्या चीज करना है, उसको किस फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कोर्स। यदि आपका एनुअली कोर्स है तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्वार्टरली हाफ ईयरली कोर्स है या सेमेस्टर वाइज कोर्स चलता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। देन पीओ को कैसे करना है, असाइनमेंट एग्जाम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। सीओ को पूरा के पूरा सीओ आप देखेंगे तो ये फैकल्टी पे बेस्ड है। एक बार पीओ जो है वो इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट लेवल पे है और पीईओ भी इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट लेवल पे, पर सीओ का पूरा के पूरा असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी लेवल पे होता है, इसलिए आप अपना सीओ असेसमेंट जरूर करिए। तो सीओ असेसमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट असेसमेंट जो आपको करना ही चाहिए अपने डिपार्टमेंट लेवल पे। तो एक बार अगेन रिकॉल कर लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में। हमने सबसे पहले देखा ब्लूम्स लेवल। ब्लूम्स लेवल टोटल 6 देखे, 6 देखे। सबसे फर्स्ट रिमेंबर देखा, जो रिकॉल कर रहा है इन्फॉर्मेशन। सेकेंड हमने देखा अंडरस्टैंड, जो रिकॉल करने के बाद जो हमने समझाया उसको अपनी भाषा में बता पा रहा है। देन हमने देखा उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो था अप्लाई। हमने जो भी सीखा उसको हम डिफरेंट सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। देन एनालाइज, जो हमने अप्लाई किया उसको एनालाइज कर रहे हैं हम, उसको ब्रेक करके स्मॉल पार्ट्स में, फिर अंडरस्टैंड करके रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। देन इवेल्युएटिंग, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हम डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने एनालाइज किया वो एनालाइज करने के बाद हमारा असेसमेंट के थ्रू वो प्रॉपर हुआ कि तो इवेल्युएट हम असेसमेंट टूल के थ्रू करते हैं। और फाइनली क्रिएट मतलब न्यू आइडिया जनरेट करना। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि असेसमेंट टूल टोटल 3 टाइप के हैं। वन इज पीईओ असेसमेंट टूल, उसके अंदर हम एम्प्लॉयर सर्वे, एलुमनी सर्वे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और हायर स्टडी रिकॉर्ड लेते हैं। अनदर वन इज पीओ असेसमेंट टूल। पीओ असेसमेंट टूल में हम एंड ऑफ द कोर्स सर्वे लेते हैं, हम इवेल्यूशन रिपोर्ट लेते हैं, डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस लेते हैं, स्टूडेंट एग्जिट सर्वे लेते हैं, एलुमनी सर्वे लेते हैं। और इसके बाद नीचे के ऑप्शनल है, आप उनको ऐड और डिक्रीज कर सकते हैं। देन हम सीओ असेसमेंट करते हैं। सीओ असेसमेंट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एंड ऑफ द कोर्स सर्वे है, स्टूडेंट कमेंट्स है, रूब्रिक्स है, इंटरनल असाइनमेंट्स है, होम असाइनमेंट्स है, सेमेस्टर एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट है एंड कोर्स परफॉर्मेंस है।
एंड ये समरी है जो अपन ने अभी तक पूरा समझा उसकी। नाउ असेसमेंट मेथड एंड टूल्स भी दो टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। ये अगेन यहाँ से असेसमेंट कैसे होता है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया या आपने एक सब्जेक्ट पढ़ाया, तो उसके असेसमेंट के दो लेवल है। एक होता है डायरेक्ट असेसमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट असेसमेंट। डायरेक्ट असेसमेंट जो होता है वो फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में खुद कंडक्ट कराता है, लाइक थ्रू एग्जाम, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ग्रुप टास्क, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क, लैब वर्क एक्सेट्रा। दिस आर कॉल्ड डायरेक्ट असेसमेंट मेथड, जो कि मेजरेबल होगा और जो कि फैकल्टी खुद कंडक्ट कराएगी। यहाँ पर एक रूब्रिक्स ऐसा है जो आपको मैं डिटेल में आगे जाके बताऊंगा, वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर बीच में कहीं आता है, पर वो आगे समझेंगे हम। इनडायरेक्ट असेसमेंट जो होते हैं वो चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ सर्वे के फॉर्म में करेंगे या फीडबैक के फॉर्म में। एल्यूमिनी फीडबैक, एम्प्लॉयर फीडबैक, कोर्स एंड फीडबैक, एग्जिट फीडबैक, इवेंट फीडबैक, पेरेंट्स फीडबैक, जितने भी टाइप के फीडबैक है या सर्वे हैं, ये सारे इनडायरेक्ट असेसमेंट टूल है। जितने भी हम फीडबैक कंसीडर करते हैं ये सारे इनडायरेक्ट असेसमेंट टूल है। आपने कोई एक इवेंट कंडक्ट कराया, उसके एंड में आपने फीडबैक लिया, दैट इज इनडायरेक्ट असेसमेंट मेथड। आपने एक कोई सब्जेक्ट पढ़ाया और आपने बीच में क्विज कंडक्ट कराया, असाइनमेंट कराया, आपने एग्जाम ली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट असेसमेंट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो उससे अटेनमेंट निकलता है। अटेनमेंट निकालने के लिए हमारा नेक्स्ट सेशन था डे 3, उस पर पूरा है। पर अभी आपको ये समझना है डायरेक्ट असेसमेंट और इनडायरेक्ट असेसमेंट क्या होते हैं। तो डायरेक्ट असेसमेंट जो होते हैं वो फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट के थ्रू। इनडायरेक्ट जो होते हैं वो सर्वेस के थ्रू होते हैं या फीडबैक के थ्रू होते हैं। Now moving towards the AICT exam reforming, basically we can take this session for AICT exam reforming continuously for 3 days or 2 days, because this is one of the biggest area where we can focus. AICT exam reforming is just simply focus on that. इनका मेन जो फोकस है वो ये है कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर बनाएं, जो भी आप असाइनमेंट पेपर दें, क्यूज पेपर दें, आप कोई सा भी पेपर बच्चों को दें जिसके भी थ्रू आप बच्चे को असिस्ट कर रहे हैं। लाइक आपने एक एमएसटी पेपर बनाया, मिड सेमेस्टर पेपर, लाइक आपने एक क्यूज पेपर कंडक्ट कराया, लाइक आपने एक असाइनमेंट दिया, लाइक आपने ट्यूटोरियल कंडक्ट कराया, दैट मस्ट बी मैप्ड विद CO, BL, ब्लूम्स लेवल एंड PI। वो मैपिंग होना चाहिए, जब होगी तो ही हम अटेनमेंट निकाल पाएंगे। दिस इज कॉल्ड AICT एग्जाम रिफॉर्मिंग। AICT एग्जाम रिफॉर्मिंग ने एक सिंपल एक बोला है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है दैट मस्ट बी मैप्ड विद CO। एटलीस्ट CO एंड ब्लूम्स लेवल पे तो होना ही चाहिए। आपको CO से मैप करना है। CO मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा तो ये कौन से CO से मैप है। क्वेश्चन नंबर 1 CO1 को इंडिकेट कर रहा है, CO2 को इंडिकेट कर रहा है या CO3 को इंडिकेट कर रहा है। देन वो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ब्लूम्स लेवल इंडिकेट कर रहा है। ब्लूम्स लेवल कौन से 6 टाइप के लेवल है, L1, L2, L3, L4, L5। उसमें से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्टेप। एक्सप्लेन मतलब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब लेवल 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट एल्गोरिथम टू फाइंड। फाइंड करना है वो भी एल्गोरिथम के थ्रू, दैट मींस अप्लाई। अप्लाई मतलब लेवल 3। कंपेयर, कंपेयर मतलब अगेन रिकॉल कर रहे हैं कोई चीज को, दो अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मींस लेवल 2। तो वी हैव टू लाइक अपने क्वेश्चन पेपर को, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो आपका, भले से वो एमएससी हो, क्यूज पेपर हो, ट्यूटोरियल हो या असाइनमेंट हो, you have to map with CO and Bloom's level. And what is this PI? This PI indicate performance indicator. If we go for NBA, there will be again bifurcation of PO in 2 components. One is called competency, another one is called performance indicator. So we can currently we can more focus on CO and Bloom's level. We can also consider PI, that is performance indicator. For that particular CO, what is the performance indicator? So we can map also with the performance indicator, but more focus for this session will be for IICT exam reforming with Bloom's level and CO mapping. So whatever the way of evaluation you have adopted for your subject, just simply you have to map that question with CO and Bloom's level. Then CO and Bloom's level से map करने के बाद आप उस क्वेश्चन को जब आप
बच्चा स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा, then we can calculate the attainment of the CO through this mapping, only and only through this mapping. So this is the one of the most important AICT exam reforming is applicable from 2018-19 or 17-18 or 18-19 onwards, and it is mandate for OBE to adopt this AICT exam reforming, because with the help of this the attainment of CO is possible, or PO faculties or many of the uh, uh, instructors confused about the rubrics, because what is this rubrics? I just take one example. सपोज आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, आपने थ्योरी सब्जेक्ट कंडक्ट कराया, एंड में थ्योरी एग्जाम हुई, उस सब्जेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए आपने क्यूज और असाइनमेंट दिया और इवेल्युएट कर लिया. व्हाट अबाउट द माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट? व्हाट अबाउट द केस स्टडी? उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? केस स्टडी में तो कोई एंड सेम में पेपर थ्योरी पेपर नहीं होता है. केस स्टडी में तो कंटिन्यू इवेल्युएशन कैसे दिखाएंगे? आइदर आप उस बच्चे का प्रेजेंटेशन लोगे, या आप उस बच्चे को बोलोगे, स्टूडेंट को बोलोगे कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ और सबमिट करो, रिपोर्ट बनाओ और सबमिट करो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो रिपोर्ट में ये कैसे होगा कि आपने उस रिपोर्ट के अंदर जस्टिफाई करे सारे स्टूडेंट के साथ? ऐसा तो नहीं है ये आपका फेवरेट स्टूडेंट है तो आपने उसको रिपोर्ट में 10 में से 10 दे दिया, और ये फेवरेट नहीं है तो आपने 10 में से 5 दे दिया. तो उस चीजों को दूर करने के लिए बना है रूब्रिक्स. रूब्रिक्स वहां अप्लाई होता है जहां पर आपके पास इवेल्युएशन के टूल नहीं है, मतलब आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है जिससे आप अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाए. उस जगह पे हम अप्लाई करते हैं रूब्रिक्स. रूब्रिक्स जनरली ट्रेनिंग हुई, इंटर्नशिप हुई, प्रोजेक्ट्स हुए, वेबिनार सेमिनार हुए, या फील्ड वर्क हुआ, या आपका केस स्टडी हुआ, इन जगहों पे रूब्रिक्स अप्लाई होता है. रूब्रिक्स जो है ये एक इवेल्युएशन टूल है जिसके थ्रू आप इवेल्युएट करते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को थ्रू मैट्रिक्स, 3 डायमेंशन मैट्रिक्स. इसके थ्रू आप इवेल्युएट करते हैं आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को. ये रूब्रिक्स उन सब्जेक्ट में, क्योंकि आपके पास सपोज एक प्रोग्राम में 40 सब्जेक्ट है, उन 40 में से 35 सब्जेक्ट्स तो जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड थे, उसको इवेल्युएट करने के लिए असेसमेंट टूल भी है. पर आप जब एक प्रोग्राम को इवेल्युएट करोगे, अटेनमेंट निकालोगे, तो आपको 40 के 40 सब्जेक्ट कंसीडर करना है. तो वो जो 40 में से 5 सब्जेक्ट बच गए उसके लिए रूब्रिक्स बनेगा, और रूब्रिक्स के थ्रू वो इवेल्युएट होगा और उसका परफॉर्मेंस इंक्लूड होगा पीओ अटेनमेंट में. आई होप सो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये पॉइंट. तो रूब्रिक्स इज अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर which describe the important component of the work being completed. मैं इसको सिंपल टर्म में बोल रहा हूँ आपको. सपोज एक एग्जांपल लो, आप इस पूरा इतना ना कंफ्यूज होते हुए समझिए. सपोज मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया, मेरे साथ एक स्टूडेंट और उसने प्रेजेंटेशन दिया. अब हम दोनों कैसे जज करोगे कि हम दोनों में से कौन अच्छा? देयर मस्ट बी सम पैरामीटर. सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मेरे साथ एक स्टूडेंट और है, उसने भी एक प्रोजेक्ट बनाया. तो आपने क्या करा, हम दोनों के प्रोजेक्ट में आपने कुछ पैरामीटर लिख दिए एक कॉलम में कि दोनों प्रोजेक्ट में से किसने टाइमली काम करा, पहला. फिर दोनों प्रोजेक्ट में से किसने टाइमली के बाद नेक्स्ट स्टेप रख लिया आपने, किसने अच्छी टीम में काम करा. थर्ड, किसने अच्छे से रिपोर्ट बनाई. ये रूब्रिक्स का एक कॉलम हो गया, एक 1 डायमेंशन रूब्रिक्स हो गया. नेक्स्ट डायमेंशन में आप क्या लिखोगे? अब सपोज किसी ने करा तो है पर पार्शली करा. मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैंने रिपोर्ट भी बनाई, पर मेरी रिपोर्ट और उसकी रिपोर्ट में दोनों में बहुत अंतर है. मेरी रिपोर्ट बहुत सिस्टमैटिक है और उसकी रिपोर्ट बहुत सुपरफिशियल वे में बन गई. तो क्या आप दोनों को 10 में से 10 दे दोगे? तो ये सेकेंड डायमेंशन है रूब्रिक्स का. सेकेंड डायमेंशन ऑफ रूब्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि हम सेकेंड डायमेंशन ऑफ रूब्रिक्स क्या है, जिसके अंदर आप ये बताते हो बेसिकली कि उसके भी बाइफिकेशन कर देते हो. जो आपने कंपोनेंट फाइंड करा, आपने बोला कि उसका प्रेजेंटेशन स्किल एक कंपोनेंट है, तो प्रेजेंटेशन स्किल को भी आप अगेन बाइफिकेट करते हो. दैट विल बी सेकेंड डायमेंशन. एंड थर्ड इज उसकी मार्किंग, स्कोर, अल्टीमेटली उसको कितना स्कोर मिल रहा है, दैट विल बी थर्ड डायमेंशन. तो रूब्रिक्स जो होता है बेसिकली इस टाइप से कुछ दिखता है. ये सैंपल रूब्रिक्स है स्टूडेंट या टीम वर्क के लिए. मैंने आपको एग्जांपल दिया. हमने क्या करा, एक कॉलम में लिखा शेयर वर्क इक्वली, या हमने लिखा फुलफिल टीम रोल्स एंड ड्यूटीज, रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन, पर हमने इसके बाद मार्क्स डाले.
अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ तो हम 1 नंबर देंगे, डेवलपिंग जैसा स्टेट में हुआ तो 2 नंबर देंगे, सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो 3 नंबर देंगे, और बहुत ही अच्छा हुआ तो हम 4 नंबर देंगे। अब कैसे पता चलेगा? डज नॉट कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक, दैट मीन्स अनसेटिस्फैक्ट्री, तो मैं 1 नंबर दे दूंगा। कलेक्ट वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन सम रिलेटेड टू टॉपिक, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, प्रोग्रेसिव वे में है पर कंप्लीट नहीं है, तो मैं 2 नंबर दूंगा। कलेक्टेड सम बेसिक इंफॉर्मेशन बट मोस्ट रिफर टू दी टॉपिक, मोस्टली जो है उससे रिफर हो रहा है और कलेक्ट भी करा, तो ये सेटिस्फैक्ट्री हुआ, तो मैं 3 नंबर दे दूंगा। और कलेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ द इंफॉर्मेशन और रेफर टू द टॉपिक, तो मैं इसमें 4 नंबर दे दूंगा। तो मैंने उस बच्चे के अगेंस्ट में पूरा जस्टिफाई करा कि मैंने क्यों उसको नंबर दिए जहां पर इवेल्यूएशन टूल ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड रूब्रिक्स फॉर स्टूडेंट कैन वर्क इफेक्टिवली इन टीम। तो हम ऐसे रूब्रिक्स बनाते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, केस स्टडीज के लिए, फील्ड वर्क के लिए, जिसके अंदर भी इवेल्यूएशन टूल नहीं है, वी हैव टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ रूब्रिक्स। हमारे पास ये रूब्रिक्स बनाने के अलावा कोई अल्टरनेट वे नहीं है उसको इवेल्यूएट करने का। तो हम इस रूब्रिक्स को 3 डायमेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक डायमेंशन में कंपोनेंट है, दूसरे डायमेंशन में हमने उसका लेवल ऑफ लर्निंग लिखा है, और तीसरे डायमेंशन में हमने उसका स्कोर लिखा है। तो बेस्ड ऑन दिस हम इसको 3 डायमेंशन रूब्रिक्स बोलते हैं, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं, और फाइनली हम उसका जहां असेसमेंट टूल ही नहीं था वहां हमने उसको असेस करा, और फाइनली हमने उसका आउटकम निकाला। Now the next will be last will be that it is as I told you that there will be 2 types of assessment tools. One is direct, another one is indirect. Indirect बहुत सिंपल है, याद रखना। इनडायरेक्ट मतलब सारे टाइप के सर्वे, सारे टाइप के फीडबैक। और डायरेक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइक हमने टेस्ट कंडक्ट कराया, असाइनमेंट दिया, रूब्रिक्स हुआ, ये सब क्या हुआ? डायरेक्ट। हमारा काम क्या होता है? इनको भी मैप करना है, कौन सा पीओ हम किससे निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने बोला PO1 में टेस्ट 1 से कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी करते हैं तो भी अटेंडमेंट आ जाता है, पर ये कर लेते हो तो और अच्छी बात है, इससे आप डिटेल्ड अटेंडमेंट समझ सकते हो। पर ये स्लाइड स्पेसिफिकली ऑप्शनल स्लाइड है आपके लिए। पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि असेसमेंट, जब असेसमेंट टूल जो होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होते हैं वो फैकल्टी के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, लाइक टेस्ट, असाइनमेंट, लेबोरेटरी वर्क, सेशन, इंडस्ट्री विजिट एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो कोर्स एंड सर्वे या जो भी डिफरेंट टाइप के सर्वे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। आई होप सो ये असेसमेंट आपको समझ में आया हो। तो नाउ द टाइम इज टाइम फॉर टास्क 2। व्हाट इज टास्क 2? दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर। आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना है कैसे? AICTE एग्जाम रिफॉर्मिंग के बेसिस पे। मतलब आपको क्वेश्चन के आगे मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन कौन से CO से मैप्ड है। फिर आपको ये मेंशन करना है कि इस क्वेश्चन के आगे कौन सा ब्लूम्स लेवल आ रहा है, लेवल 1 2 3 4 5 6, और यू हैव टू जस्ट सबमिट और मेल टू ankit96927@gmail.com। आफ्टर, देखिए आपने टास्क 1 करा, CO फॉर्म हो गया आपके। टास्क 2 करा आपने उसकी मैपिंग कर दी। अब टास्क 3 क्या बचता है? सिर्फ अटेंडमेंट। तो फाइनली आप अटेंडमेंट ऑफ CO कर पाएंगे। अटेंडमेंट ऑफ PO करना है तो यू हैव to add one more task that is related to CO-PO mapping. You have to map your CO with PO. Then आप attainment of PO भी कर पाएंगे, और उसके लिए आपको फिर CO-PO mapping भी करना पड़ेगा। So this is your task 2. I hope so you understand about the question paper. What is this question paper based on AICTE exam reforming? Now last conclude within a few minutes that whatever I have explained in till now, this will be combinedly explained through one slide. सबसे पहले आपका कोर्स आया, कोर्स से आपने कोर्स आउटकम बनाया। अब यहाँ पर एक चीज मैंने मिस करी, अभी वो नहीं बताइए आपको, कि आप जब कोर्स आउटकम बनाते हैं तो यू हैव टू आल्सो मेंशन व्हाट इज योर टारगेट। व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट? टारगेट मीन्स दैट मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरा ये टारगेट है कि आप लोग जो अटेंड कर रहे हैं वेबिनार, उसमें से 50% पार्टिसिपेंट को ये समझ में आया कि मैं जो समझा रहा हूँ, तो ये मेरा टारगेट हुआ 50%। पर सपोज मैंने बोला नहीं, मेरा टारगेट है 70%, कि 70% पार्टिसिपेंट को मेरे लेक्चर समझ में आए। दिस इज माय टारगेट 70%। तो यू हैव टू मेंशन बिफोर द सेशन, बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, व्हाट इज योर टारगेट। और टारगेट इन टर्म्स ऑफ कि आपने जो CO है उसका अटेंडमेंट कितने % ऑफ स्टूडेंट कवर अप करेंगे। तो आपने बोला से फॉर एग्जांपल 70% इज माय टारगेट, तो आपने टारगेट डिफाइन करा, वो एक अलग साइड है।
आपने सीओ डिफाइन करा हुआ एक अलग साइड, तो आपने सीओ डिफाइन करे, आपने टारगेट डिफाइन करा, देन सीओ डिफाइन करने के बाद आपने उसका क्या करा, असिस्मेंट करा। असिस्मेंट करने के लिए असिस्मेंट टूल्स का यूज करा। असिस्मेंट टूल्स का यूज करने के बाद आप उसका सीओ अटेनमेंट निकालेंगे, जो अपन कल पढ़ेंगे, सीओ अटेनमेंट। और फाइनली जो सीओ अटेनमेंट आएगा और जो टारगेट आपने डिसाइड किया, इन दोनों के बीच में कुछ गैप होगी। सपोज मैंने टारगेट बोला 70% और अटेनमेंट आया 69%, तो 1% की गैप हो गई। मैंने बोला नहीं, मैंने टारगेट डिसाइड किया 70% और आउटपुट भी 80% आ गया, तो देयर विल बी नो गैप इन सीओ अटेनमेंट। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू टेक एक्शन फॉर मिनिमाइजिंग द गैप, और वी कैन से गैप एनालिसिस। और after CO attainment, we can go for PO and PSO attainment. But for PO and PSO attainment, one minimum requirement that you must have CO-PO mapping. As our topic of the workshop is calculation of CO, that's why I'm more focusing on CO. If we go with PO, then you have to focus on CO-PO mapping also. And this will be the last OBE process. Basically, we have to plan everything, then we have to develop, then we have to implement and we have to evaluate. यही हम अभी ओबी में करते हैं। हमने पहले हमारी प्लानिंग करी। मैंने आपको बोला सब्जेक्ट पढ़ाने के पहले आप प्लान करो कि आप क्या पढ़ाओगे, उसका आउटकम निकालो। आपने आउटकम फॉर्मुलेट कर लिया, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया। फिर मैंने बोल रहा हूँ डेवलप करो। डेवलपिंग मतलब आपने जो प्लान किया उसको कैसे करोगे, तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग। मैंने उसको बोला कि मैं फॉलोइंग असेसमेंट टूल यूज करूंगा या मैं फॉलोइंग थिंग करूंगा, वो चीज मैंने लिखी। मैंने बोला कि मैं CO1 को असिस्ट करने के लिए क्यूज कंडक्ट कराऊंगा, CO2 को असिस्ट करने के लिए ट्यूटोरियल कराऊंगा। वो मेरा क्या हुआ, डेवलपिंग। एंड थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन। जो मैंने बोला उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब मैंने बोला कि क्यूज कराऊंगा तो क्यूज करा देना चाहिए मुझे आफ्टर यूनिट नंबर 1 कंप्लीशन। दैट विल बी इम्प्लीमेंटेशन। और देन इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग मींस अगेन दैट मींस जो आपने उसका क्यूज कंडक्ट कराया, उसके बाद जो उसके मार्क्स आए, उस मार्क्स से स्टूडेंट वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इवेल्युएटिंग। एंड अगेन जब आप नेक्स्ट टाइम प्लान करो तो उस इवेल्युएटिंग को ध्यान में रखते हुए प्लान करो। ऐसा तो नहीं कि आपने टारगेट कुछ ज्यादा ही हाई ले रखा है कि आप अगली बार अचीव ही नहीं कर पा रहे वो टारगेट। दिस इज जस्ट सिंपली OBE प्रोसेस जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। यही मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कराया है। दिस इज कॉल्ड OBE प्रोसेस, जिसको आपको डिटेल में मैंने समझाया है। बाकी ये और भी इसकी डिटेल है, पर मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा। पर अभी मेन ये 4 पैरामीटर थे जो हमको समझना था, जो कि OBE की प्रोसेस के ऊपर थे। So this all about the day 2 and the task. Please remember the task 2 that you have to prepare the question paper and based on ICT exam reforming, and you have to submit that question paper for the evaluating. And that in next session we will go for finally the attainment of C. Now the session is open for question answer. If anyone have any questions, please you can ask the question. Please remember the task 2 that will be you have to prepare any one question paper and map with CO and Bloom's level and share to me. And this will be your task 2. Then in the next session we will learn about the finally the attainment of C. And okay, thank you so much. Anyone have any doubts?
I think there will be no doubts. So I request Dr. Sheesh Chabra sir, shall I close or wait? Okay, no issue, sir. And thank you so much. And we will connect tomorrow at 5:30 for the final session of the workshop of outcome-based education. And we will learn about tomorrow about the calculation of CO, or we can say attainment of CO, and overview of PO also. And please complete the task too. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Shakar sir.